हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंत एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर को हमने सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के सारे बेसिक कंसेप्ट देखे। आज हम टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट टाइप, एम्प्टी सेट। A set which does not contain any elements is called empty set. Empty set is denoted by, it is denoted by empty curly bracket or phi. This is the symbol of empty set. एम्प्टी सेट मीन्स जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं रहता उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द सेट, ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 5 is less than x less than 6. This set is the example of empty set. Why this is empty set? समझो, हमें A सेट रोस्टर फॉर्म में लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे तो मुझे क्या एलिमेंट्स मिल सकते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स और ओ नेचुरल नंबर्स 5 और 6 के बीच वाले नेचुरल नंबर्स। देयर इज नथिंग natural numbers between 5 and 6. So this set is empty set. Another example, B is equal to in curly bracket x such that x belongs to R and x square is equal to -2. समझो, ये सेट हमने रोस्टर फॉर्म में लिस्टिंग मेथड में लिखना है। B is equal to इन कर्ली ब्रैकेट, हमें रियल नंबर चाहिए और उसका स्क्वायर -2 आना चाहिए। आपको पता है स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव, देयरफॉर दिस सेट इज एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स whose square is negative. Set of all real numbers whose square is negative. The set of all real numbers whose square is negative. ऐसा रियल नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा। आपको पता है स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव, देयरफॉर दिस सेट इज द एम्प्टी सेट। ओके, देन नेक्स्ट टाइप, नॉन एम्प्टी सेट। अ सेट कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। जिस सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट रहता है उस सेट को हम नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 0। सेकंड एग्जाम्पल, B इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 5। C इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 2 3। ओके, दीज आर नॉन एम्प्टी सेट। Next types, singleton set. A set which contain only one element is called a singleton set. जिस सेट में only one element रहता है उस सेट को हम singleton set कहते हैं। For example, A is equal to in curly bracket 5. This is singleton set because
this set contain only one element. Another example, B is equal to in curly bracket X such that X belongs to N and X square is equal to 9. अगर हम A सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मुझे मिलेगा B is equal to in curly bracket 3. See here, X belongs to N means elements belongs to natural numbers. X square is equal to 9. X square is equal to 9. Therefore, X is equal to plus or minus 3. But minus 3 is not a natural number. Plus 3 is the natural number. Therefore, this set contains only one element. So, it is singleton set. Another example, set of all integers which are neither positive nor negative. Another type, a set which contain only two elements is called pair set. जिस सेट में only two elements रहते हैं उस सेट को हम पेयर सेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, A is equal to 2, 3. B is equal to in curly bracket 5, 7. These are pair sets. Why these are pair sets? Because they contain only two elements, so they are pair sets. Next example, next type, finite set. A set containing a finite number of elements is called a finite set. For example, set of all students in your class. Set of all students in your class. This is the example of finite set. Second example, set of letters in the word beautiful. Set of letters in the word beautiful. समझो हमें ए सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ए सेट, सर इसका नाम समझो ए है. ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट बी कॉमा ई कॉमा ए कॉमा यू कॉमा टी कॉमा आई कॉमा एफ कॉमा यू ऑलरेडी आया है तो सेकंड बार लिखने की जरूरत नहीं. एल, दिस इज फाइनाइट सेट बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स are limited finite elements. Therefore, this set is the example of finite set. An empty set is a finite set. And empty set is a finite set. Next type, infinite set. A set which is not finite is called infinite set. For example, natural numbers n is equal to 1, 2, 3, 4, ... This is the example of infinite set. Second example, set of whole numbers 0, 1, 2, 3, ... This is the example of infinite set. Another example, set of integers I is equal to in curly bracket ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... This is the example of infinite set. Set of rational number, set of real numbers, these are the examples of infinite sets. Another example,
set of all points in a plane. Set of all points in a plane. This is also one of the example of infinite set. Okay, next type equal set. Two set A and B are said to be equal if A is the subset of B and B is the subset of A. It is denoted by A is equal to B. देखो टू सेट A and B कब इक्वल होंगे? A सबसेट B and B सबसेट A ऐसी कंडीशन फुलफिल होगी तो A and B इक्वल सेट होंगे. इसका मतलब every element of set A is the element of set B and every element of set B is the element of set A. ऐसी कंडीशन जब फुलफिल करेंगे उस समय वो दो सेट इक्वल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल A is equal to in curly bracket 1, 2, 3. B is equal to in curly bracket 2, 3, 1. Every element of set A is the element of set B and every element of set B is the element of set A. That means A is the subset of B and B is the subset of A. Therefore, A is equal to B. Set A and set B are equal sets. Next type. Equivalent set. Two finite set A and B are said to be equivalent if number of A is equal to number of B. देखो A is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4. B is equal to in curly bracket 5, 6, 7, 8. यहाँ पे number of A is equal to 4 and number of B is equal to also 4. Therefore, number of A is equal to number of B. Therefore, A and B are equivalent sets. A and B are equivalent sets, but not equal. Why these sets are not equal? Because they do not contain same element. Number of elements equal है, लेकिन अगर A is the subset of B रहता या B is the subset of A रहता तब ये दो सेट इक्वल हो सकते थे, लेकिन ये दो सेट इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है. ओके, नेक्स्ट टाइप सबसेट. व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सबसेट? If every element of a set A is also an element of set B, then A is said to be a subset of B. Set A का every element अगर set B में रहता है तब set A को set B का सबसेट कहते हैं. It is denoted by A subset B. For example, A is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4. B is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here, every element of set A is an element of set B. Therefore, A is the subset of B. A is the subset of B. अगर हम एक सेट लेंगे और उसके सबसेट फाइंड आउट करेंगे तो हमें कितने सबसेट मिलते हैं वो भी देखेंगे. नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू
2 raised to n, where n means number of elements, where n is the number of elements, देखो a is equal to in curly bracket 1 comma 2 comma 3, therefore number of subsets is equal to 2 raised to 3 is equal to 8. नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने रहेंगे? 2 raised to 3 is equal to 8 सबसेट हमें मिल सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एम्प्टी सेट, सेकंड 1, थर्ड 2, फोर्थ 3, फिफ्थ 1 comma 2, sixth 1 comma 3, seventh 2 comma 3, and eighth 1 comma 2 comma 3. These are the 8 subset of the set A. Every set is subset of itself. Every set is the subset of itself. Empty set is the subset of every set. Empty set is the subset of every set. Okay, next types of set. Superset. If A is the subset of B, then B is called superset of A and written as B is the superset of A. Next type, proper subset. If all the elements of set A are in set B and B contains at least one element which is not in set A, then we say A is proper subset of B and written as A proper subset of B. Thus, A proper subset of B if A is the subset of B but A is not equal to B. For example, n set of natural number 1, 2, 3, 4 and dot. Whole number W is equal to 0, 1, 2, 3, 4, dot. Here n is the proper subset of W. Why? Because set W contain at least one elements which is not in set N. See here, N is the proper subset of W. N is the proper subset of whole number. Natural number is the proper subset of whole number. Whole number is the proper subset of integer numbers. Integer numbers is the proper subset of rational numbers. Rational numbers is the proper subset of real numbers. Set A is the proper subset of B. ऐसे हम कभी कह सकते हैं set A is the subset of set B. Set A is the subset of set B and A is not equal to B. ऐसी कंडीशन जब रहेगी तब हम कह सकते हैं A is the proper subset of B. Okay, next type power set.
the set of all subsets of a given set A is called the power set of A. It is denoted by P of A. समझो मेरे पास एक सेट A है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3। मैंने इसके सारे सबसेट फाइंड आउट किए और उसका सेट बनाया, तो हम उस सेट को हम पावर सेट कह सकते हैं। Therefore, power set of A is equal to, in curly bracket, first element empty curly bracket means empty set. Empty set is the subset of every set. Second element curly bracket with 1. Third element curly bracket in 2 with 2. Third element curly bracket 3. Fourth element 1, 2. Next 1, 3. Next 2, 3. Next 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 elements of this power set A. Power set A contain 8 elements. Number of elements in power set फाइंड आउट करने के लिए एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। इफ A has n elements, then P of A has 2 raised to n elements. 2 raised to n elements. For example, here set A has 3 elements, that is number of A is equal to 3. Therefore, number of power set of A is equal to 2 raised to 3 is equal to 8. 2 raised to n. The value of n is 3 here. 2 raised to n is equal to 8. Next concept, universal set. Next type, universal set. A set U is said to be universal set if all the sets under consideration are subset of the set U. The universal set is denoted by capital U. For example, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, सेट U is equal to, in curly bracket, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another set, set A is equal to, in curly bracket, 1, 3, 5, 7, 9. That is the set of odd numbers. B is equal to, in curly bracket, 2, 4, 6, 8, 10. And C is equal to, in curly bracket, 2, 3, 5, 7, curly bracket complete. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा A is the subset of U, B is also subset of U, and C is also subset of U. That means the sets under consideration are the subset of U. Therefore, U is called universal set. Therefore, U is called universal सेट। U को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आज हम यहां रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।